Hi, myself Dr. Milind. Today we will start endocrinology. Yesterday we did the introduction of the endocrinology. Today we will do the pituitary disorder, and primarily we will focus on hypopituitarism, like Sheehan syndrome. This is the like bread and butter of your every exam, was also for your clinical practice, because Sheehan is very commonly encountered, but in India especially, but it is most oftenly missed by physicians or MBBS or even a endocrinologist, but rarely by endocrinologist. So आज देखो यार, पिट्यूटरी के बारे में अपनों ने डिस्कस करा था कि इट इज सर्कुलेटेड सप्लाइड बाय द portal circulation, that is a low pressure system that is susceptible to hypoperfusion. तो जब भी इन पेशेंट का शॉक की स्टेज में जाएगा ड्यू टू ब्लड लॉस, लाइक इन ए पोस्टमार्टम हेमरेज और in a case of C-section, that is a bloody surgery, the pituitary will infarct, and that infarction will cause panhypopituitarism. So what is the definition of panhypopituitarism? Is three or more than three excess are non-functional in pituitary, then we will label it as panhypopituitarism. And to diagnose that, we will always go first by the biochemical test, then by the imaging test. So this is the simplicity of panhypopituitarism. So I will give you an example, like if a 30-year-old female present you with fatigue, with weight gain, with loss of pubic hair, and with low BP, low sugar, and with amenorrhea. So I'm not talking about the diagnosis. If you ask, if I ask what is the first test you will order, then your answer should be not a TSH, not a MRI pituitary. Your answer should be first test is beta HCG or UPT, urine pregnancy test, because I have said amenorrhea, and whenever you in lifetime remember this, if a female present with menstrual irregularities, first of all always rule out pregnancy, then go for other grave diagnosis, because if you miss pregnancy, so you are then you go for CT or X-ray, you are harming the fetus. So always with menstrual irregularity in females, doesn't matter what other symptoms are given, if asked not diagnosis, if asked first test you should order, then your answer should be UPT or beta HCG. Then again another question, like whenever like three or more than three एक्सेस, तो अपनों ने पिट्यूटरी में मेनली क्या क्या सिक्रीट होता है? ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट होता है. ग्रोथ हार्मोन नहीं होगा तो पेशेंट की शुगर डाउन होगी, क्योंकि ग्रोथ हार्मोन इज स्ट्रेस हार्मोन दैट इंक्रीजेस योर शुगर लेवल. तो ग्रोथ हार्मोन का डेफिसिट होएगा तो पेशेंट का शुगर लो होगा. सेकेंड, अगर थायराइड नहीं होगा, टीएसएच नहीं होगा, तो हाइपोथायराइड के सिम्टम आएंगे, वेट गेन आएगा, एजिटेशन रहेगा, एंजाइटी रहेगी, एंड लेथार्जिक रहेगा पेशेंट. देन गोनाडोट्रोपिन्स रिलीज नहीं होगा तो पेशेंट का एमिनोरिया होगा, लॉस ऑफ प्यूबिक हेयर होंगे. देन प्रोलैक्टिन नहीं होगा तो पेशेंट विल बी अनेबल टू ब्रेस्ट फीड हर बेबी इमीडिएटली आफ्टर द डिलीवरी. So like these are the major excess, and if three or more than three excess are gone, that is patient is unable to breastfeed or has recurrent hypoglycemia without any OHA, or having hyponatremia with a normal potassium, then you will label it as panhypopituitarism. Your diagnosis should be not Sheehan. Your first diagnosis is panhypopituitarism. Panhypopituitarism is a spectrum in which it include Sheehan, which include lymphocytic hypophysitis, or a tumor like craniopharyngioma, or a bleed, or post-radiation panhypopituitarism, or histiocytosis X, or infiltrative disorder like sarcoidosis or amyloidosis. So what I mean is that whenever you have symptoms of three lineage suggesting decreased pituitary function, so do not label it as spot diagnosis as Sheehan. Take a clinical picture, take imaging, then only you can say whether it is Sheehan, whether it is lymphocytic hypophysitis, whether it is sarcoid. Because if like patient is hypothyroid, that is secondary hypothyroid, patient has growth hormone deficiency, and patient has decreased prolactin, or better to say, rather than decreased prolactin, you can say patient has decreased LH and FSH, decreased cortisol. If she is a 30-year-old female with history of PPH or history of C-section, तो आपका diagnosis रहेगा Sheehan. If he is a 30-year-old female
और मेल विथ हिस्ट्री ऑफ हेडेक, विथ हिस्ट्री ऑफ ऑटोइम्यून डिसऑर्डर, और एमआरआई के अंदर आपको एम्प्टी सेलर नहीं मिल रहा, सेलर खाली नहीं मिल रहा, सेलर इज ब्राइटन अप बाय gadolinium contrast, then your diagnosis changes to lymphocytic hypophysitis. If this is a patient who is like 12 year 13-year old, with then you will and with a mass lesion on the pituitary rather than empty cellar, then you will suspect craniopharyngioma. If this is a patient with headache with lab investigation showing slightly increased prolactin, then you will think of non-functioning pituitary adenoma. If these symptoms and these labs are present with history of chronic cough with mediastinal lymphadenopathy, then you will suspect sarcoidosis. So what I want you all to learn is never spot diagnosis as Sheehan. Spot diagnosis Sheehan भी मैं आपको बताऊंगा, जो कि आप एक facial picture से देख सकते हो. But I want you to all to understand like panhypopituitarism is a big thing in which there are multiple causes. So whenever you suspect more than 3 lineages are defective, then your DD should be panhypopituitarism. Among panhypopituitarism, think in which category patient is fitting, because we commonly see Sheehan as physicians, but there might be like, if you are sitting in Africa, you may see sarcoid very common. And if you are dealing with rheumatoid arthritis patient, then you may deal with secondary amyloidosis causing these disorders. So, or if you are in oncology department, or you are commonly regularly radiating the patient for brain mets or brain carcinoma, then you may see post radiation pituitary hypopituitarism. So it is a big spectrum in which you are different DDs. So अपने यहाँ फोकस करेंगे शीहैन पे और लिम्फोसाइटिक हाइपोफाइसिटिस पे, बट आपके दिमाग में पिक्चर क्लियर होनी चाहिए कि इनके अलावा भी और डायग्नोसिस होता है, लेकिन दिस इज द 2 मोस्ट कॉमन कॉजेज जो कि आपसे यूजुअली हमेशा पूछा जाएगा. तो नेक्स्ट अपने आएंगे यार कि शीहैन में हिस्ट्री कॉमनली क्या होगी, लाइक द फर्स्ट हार्मोन टू बी डेफिशिएंट इज ग्रोथ हार्मोन, लेकिन उसका यूजुअली सिम्टम नहीं आता. सिम्टम आता है उसके बाद प्रोलैक्टिन की कमी का, और प्रोलैक्टिन की कमी के कारण पेशेंट इज अनेबल टू ब्रेस्ट फीड हर बेबी. सो जब भी आपने अगर लाइक इफ यू आर ए गायनी रेजिडेंट, तो यू कॉमनली diagnose Sheehan, or if you are a physician working in a multi-specialty hospital with coordination of gynae residents, then you will also encounter Sheehan very frequently if you are vigilant enough. Because Sheehan के साथ क्या प्रॉब्लम होती है कि देखो, जब भी बॉडी में पिट्यूटरी का लॉस होता है ना, तो देयर आर वन कॉल्ड लग्जरी हार्मोन, मतलब इन द जनरल टर्म्स, और वन आर कॉल्ड लाइफ सेविंग हार्मोन. सो लग्जरी हार्मोन जो कि मैंने आपको कल बताया था, आपको हट्टा कट्टा रखने में मदद करेंगे, जैसे ग्रोथ हार्मोन, ये और आपके सेक्सुअल डिजायर को मेंटेन रखें, दैट इज LH, और आपकी फर्टिलिटी को मेंटेन रखें. These are the luxury hormone, that is they are not necessary for life, but they play a key role in the quality of your life. तो ये सबसे पहले जाते हैं, जिसका यूजुअली पेशेंट बड़े वेग सिम्टम लेके आता है. एंड इफ वी आर नॉट विजिलेंट इनफ और वी हैव नॉट स्टडीड इनफ ना, देन वी विल मिस दिस पेशेंट एट दैट पॉइंट. और जो कि हमारे साथ होता है, हमने जितने शीएन देखे, 90% ऑफ द पेशेंट came after like 2 to 3 years of delivery. They had hypothyroidism, they had hypoglycemia, they had decreased cortisol. What I mean is कि the last hormone to get lost is thyroid, before that is cortisol. तो हमारे पास पेशेंट तब आता है बिकॉज उससे पहले इतनी वेग कंप्लेन होती है, या फिर अपने भी उस चीज को ऑब्जर्व नहीं कर पाते, और वी यूजुअली मिस दैट पेशेंट. सो हाइपोग्लाइसेमिया इन दिस पेशेंट इज वेरी डेडली. सो आपको हमेशा क्या ध्यान रखना है, always be vigilant enough. It is spot diagnosis. मैं अभी आपको समझाऊंगा कि you can just by seeing a patient's face you can diagnose her by as Sheehan. So उस पे अभी आऊंगा. तो ये आपको बताना चाहता हूँ कि there is sequential loss of hormone in which there is first loss of luxury hormone and last is the loss of the life-saving hormone like thyroid and cortisol, because like cortisol helps in maintaining your BP as well as your sugar levels. So these are the stress hormone that you should be aware, mainly cortisol and growth hormone. So आपके पास 2 सिनेरियो मैंने बताया था. एक फीमेल आती है जिसमें हार्मोनल पहले 3 लीनिएज का कम आ रहा है और उन्हीं लीनिएज के सिम्टम आ रहे हैं. तो आपके पास अगर उसमें डिलीवरी की हिस्ट्री विद सी सेक्शन और विद PPH विद लॉस ऑफ लैक्टेशनल विद लैक्टेशनल फेलियर विद एमिनोरिया, तो आपका डायग्नोसिस रहेगा शीहैन.
अगर उसके हेडेक की हिस्ट्री है, प्रोलैक्टिन स्लाइटली एलिवेटेड है, तो दैट इज मास स्टॉक इफेक्ट ड्यू टू नॉन फंक्शनिंग पिट्यूटरी एडिनोमा कॉजिंग पैनहाइपोपिट्यूटिज्म। क्योंकि जैसे ये पिट्यूटरी है और इसमें अगर एक एडिनोमा बन रहा है, वो बढ़ रहा है, वो बढ़ने के कारण क्या करेगा, बाकी सारे नॉर्मल पिट्यूटरी को कंप्रेस कर देगा और खुद भी कुछ रिलीज नहीं करेगा। तो आप सवाल पूछोगे प्रोलैक्टिन कैसे बढ़ रहा है, बिकॉज दैट इज मास स्टॉक इफेक्ट। ऐसा बोला जाता है जब भी ये पिट्यूटरी साइज में बढ़ती है तो रिलेटिवली यहाँ जो ऊपर से डोपामाइन का इनिबिशन आ रहा है वो भी कम हो जाता है, और दूसरी चीज ये मास खुद भी इस स्टॉक को कंप्रेस कर देता है, बड़ा होके कंप्रेस कर देता है। सो इट कॉजेज डिक्रीज रिलीज ऑफ डोपामाइन और डिक्रीज इफेक्ट ऑफ डोपामाइन ऑन पोस्टीरियर पिट्यूटरी कॉजिंग इंक्रीज प्रोलैक्टिन. So you have slightly raised prolactin, not significantly raised, like in range of 50 to 100, 150. So this is a case of non-functioning pituitary adenoma. The most common cause of panhypopituitarism is non-functioning pituitary adenoma. Other causes common in India is Sheehan, or in Western countries is lymphocytic hypophysitis. इंडिया में Sheehan कॉमन क्यों है? क्योंकि इंडिया में PPH बहुत ज्यादा कॉमन है, और इंडिया में ड्यू टू like very over population, we have poor setup available in the delivery section. We don't have BP monitoring 24/7 throughout for every patient, so that result in transient hypotension that is only found out when patient is deteriorating enough, that causes pituitary infection and hence causes Sheehan. तो उस टाइम वो लैक्टेशन फेलियर होता है, पेरीफेरी में लैक्टेशन फेलियर होती है। आजकल सीधा बच्चे को वो मिल्क पाउडर पिलाना शुरू कर देते हैं, बट नोबडी फाइंड आउट कि व्हाट इज द कॉज. एवरीबडी थिंक इट इज अ लोकल कॉज ड्यू टू सम ब्रेस्ट इश्यू, बट इवेंचुअली अगर आप उसको अग्रेसिव वर्कअप फाउंड करोगे तो इन 50% ऑफ द केसेस यू मे फाइंड कि दिस पेशेंट हैज Sheehan syndrome. So that is how the diagnosis of Sheehan is usually done. Then we will come at what is the cause of Sheehan. We have already discussed it is either C-section because it is a bloody procedure, or due to massive blood loss due to PPH. It will cause hypoperfusion, then causes Sheehan syndrome, और पोर्टल सर्कुलेशन होता है इसलिए. साइन एंड सिम्टम पे मैं आता हूँ. इसमें सिर्फ एक्सेस की तरफ से आप ध्यान रखो. फेस से कैसे देख के बताना है, मैंने आपको कल भी बताया था. इन शीहन सिंड्रोम देयर इज डिक्रीज रिलीज ऑफ MSH also, melanocyte stimulating hormone, that causes like आपकी स्किन पे मेलानिन अच्छा नहीं होगा, उसके कारण क्या होगा, आपकी स्किन हाइपोपिगमेंटेड हो जाएगी. इट विल कॉज पेल स्किन, है ना. तो आप शक्ल से तो देखोगे पेल है, लेकिन एज सून एज यू रिट्रैक्ट द कंजक्टिवा यू विल सी यार इन कंजक्टिवा देयर इज नो पेलर. दैट मींस पेशेंट इज not actually anemic, that is paler without anemia. क्या आप causes पढ़ोगे जाके तो one of the causes hypopituitarism, another cause is hypothyroidism that you should be aware. तो होगा क्या कि इसमें पेल मिलेगी और ऑरेंज ह्यू कलर मिलेगा. बिल्कुल आपको, आई विल पुट द फोटो इन द नोट्स, यू कैन सी दैट आल्सो. आई विल शो यू इन लाइक 5 to 10 minutes. तो उसमें ऑरेंजिश ह्यू मिलता है. देयर इज फाइन रिंकलिंग ओवर हियर, है ना, ओवर द लेटरल साइड ऑफ योर आईब्रोज. दे हैव very fine wrinkles, unlike my forehead. These are like coarse wrinkles. You can see in the video there itself, they are very large wrinkles that you can see easily, but in these patients you will see fine wrinkling of the forehead, and fine wrinkling in the hands also. We have seen these are pretty common in Sheehan, and if you like get familiar with the faces of Sheehan, you can spot diagnose them just by the face itself. Now regarding what are the laboratory investigation and what are the sign and symptoms. Sign and symptom are according to the axis. If thyroid axis is gone, so patient will be lethargic, will have weight gain, will have anxiety issue. If cortisol is gone, then patient will have recurrent episode of hypoglycemia and also hyponatremia with a normal sodium. If gonadotropins are gone, then patient will have amenorrhea, will have loss of pubic hair, and if loss of commonly prolactin, then unable to breastfeed, and loss of growth hormone causes hypoglycemia. So these are the symptoms of sign and symptoms of Sheehan. And like Indian doctors have usually more experience than the US or UK graduates because of common frequency of Sheehan in India because of increased incidence of PPH and poor monitoring of the blood pressure. Then what is the clinical diagnosis? Diagnosis एक आप clinical basis पे कर सकते हो. Lab के अंदर you can see the all the axis, that is ACTH and cortisol for the steroid axis, LH, FSH, and for the sexual hormone axis. Then you can see also sugar and electrolyte
to judge the cortisol in a peripheral setup, or you can see TSH, T3, T4, cosintropin stimulation test, prolactin. So these are the tests of different axes that you will use, and आप कम से कम 3 एक्सेस को लेबल करोगे, अगर 3 से ज्यादा 3 खराब है then you will label it as panhypopituitarism. क्लिनिकल पिक्चर पे देख लोगे, इन द MRI you will find empty stela. I have told you earlier also, हमेशा लेबोरेटरिकल टेस्ट पहले कराना है, then go for higher end test, that is radiological test. So if I have a empty cella and I come to you without any symptom, without any abnormality, तो आप मेरे को just reassurance दोगे, it is totally fine. My all have lumpy bumpy gland, it doesn't mean that patient is pathological. If you do 100 MRI of 100 asymptomatic patient, you will find something that is not pathological. These are called as radiologically isolated syndromes, RIOS. ठीक है, so they have no clinical relevance whatsoever. So इसलिए हमेशा डायग्नोस करने के लिए पहले बायोकेमिकली आपको प्रूव करना है. देन आप अपने आते हैं ट्रीटमेंट. व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ शीहन सिंड्रोम? द ट्रीटमेंट इज रिप्लेसमेंट ऑफ द पिट्यूटरी हार्मोन. तो कॉमनली ये पेशेंट, यूजुअली इंडियन सिनेरियो में बात करता हूँ क्योंकि द कॉज इज डिलीवरी इटसेल्फ, सो यूजुअली ये 1-2 डिलीवरी के बाद आती है. दे हैव गुड फैमिली प्लानिंग, उनके ऑलरेडी बच्चे हो चुके होते हैं, तो यू डू नॉट रिप्लेस द स्टेरॉइड एक्सेस बिकॉज यू डू नॉट रिप्लेस द सेक्सुअल हार्मोन एक्सेस बिकॉज पेशेंट की फैमिली प्लानिंग हो चुकी होती है, फर्टिलिटी अचीव हो चुकी होती है. तो यूजुअली यू रिप्लेस द नेसेसरी हार्मोन, दैट इज स्टेरॉइड एक्सेस, एंड सेकेंड वन इज अपना cortisol axis and second one is thyroid axis. तो आप इसमें thyroxine replace करते हो according to the weight, and you will also replace cortisol with the prednisolone. 10 mg per day is enough dose to replace the normal physiological doses of the body that is required every day, that is 10 mg prednisolone per day. And thyroid you will require 1.6 microgram per kg per day. Growth hormone is usually not replacement required because these patients are 30-year-old, they have achieved their bone growth and muscular growth. So usually or commonly females में होता है. So usually we do not replace the growth hormone. We just need to replace 2 hormones only, that is steroid and thyroid hormone. Second of all, the common mistake that I did also as a resident कि यार ये पेशेंट ओपीडी के अंदर आते हैं तो इनको आप फॉलो अप कैसे करोगे थायराइड के लिए कि वेदर यू हैव गुड डोजेज ऑफ द थायराइड. तो व्हाट आई डिड एज अ कॉमन मिस्टेक, इट वाज सो फनी, आई फाउंड इट लाइक इन द 3rd ईयर कि यार इन पेशेंट में हाइपोथायराइडिज्म सेकेंडरी हाइपोथायराइडिज्म है, तो मतलब पिट्यूटरी काम नहीं कर रही है, तो मैं टीएसएच लेवल नहीं कराना आपको. ठीक है, नॉर्मली इट इज लाइक कॉमन प्रैक्टिस, और ये बिल्कुल सही है कि जब भी आपको हाइपोथायराइडिज्म सस्पेक्ट करना है और उसको फॉलो अप लेना है तो आप सिर्फ टीएसएच देखते हो. हर 3 महीने में आपके पास आएगा टीएसएच नॉर्मल है, दैट मीन्स उसका हाइपोथायराइडिज्म कंट्रोल है. लेकिन इस पेशेंट का है तो हमेशा नॉर्मल रहेगा, लो रहेगा. इसमें प्रॉब्लम की पिट्यूटरी काम ही नहीं कर रही, तो इट मे बी नॉर्मल और इट मे बी लो. और अगर आप ऐसा नहीं कि थायरॉक्सिन रिप्लेस कर दोगे तो उसके लेवल में डिफरेंस आएगा बिकॉज पिट्यूटरी बिल्कुल ही काम नहीं कर रही है. तो आप इसमें फ्री T4 से हमेशा फॉलो अप करोगे. हर 3 महीने में जब भी आपके पास पेशेंट आएगा, यू जस्ट गेट फ्री T4 लेवल्स डन. इफ दे आर सफिशिएंट, दे आर नॉट लो, दैट मींस योर थायरॉक्सिन इज एडिक्वेट, यू डू नॉट टू रिप्लेस एनी मच मोर. सो दैट इज व्हाट आई वांट टू टेल यू इज इन केस ऑफ सेकेंडरी हाइपोथायराइडिज्म, वेदर इट इज ड्यू टू शीहन, वेदर इट इज ड्यू टू lymphocytic hypophysitis, iatrogenic removal of the pituitary for acromegaly whatsoever, आपको हमेशा क्या करना है, फॉलो अप किससे करना है, फ्री T4 से. डू नॉट यूज TSH, please in case of secondary hypothyroidism. So these are the treatment of Sheehan. Then if all these features are common but patient present with headache, with is a male, maybe a female with history of autoimmune disorder, and there is enhancement on the gadolinium contrast, then you will label it as lymphocytic hypophysitis. Why you need to know this, guys? Because if you know lymphocytic hypophysitis, you can easily treat it with just steroid because it is autoimmune disorder with overproliferation, overactivation of the lymphocyte. Just give that patient steroid and his pituitary and function will be fine. So on MRI you will see gadolinium contrast enhancement. I will show you the images in a bit.
Then other causes of panhypopituitarism, like if I'm an onco patient and I get a brain mets, I get a like radiation of my cranium, then also I can get panhypopituitarism. If you are working in a surgical neurosurgical department and patient has massive head trauma with a massive bleed, then that patient may also have hypopituitarism. Or अदर कॉजेज इन इंडिया लाइक ट्यूबरकुलोसिस का इन्फिल्ट्रेशन हो गया वहाँ, अमाइलोइडोसिस, सार्कोइडोसिस, सिकल सेल एनीमिया कॉजिंग सिकल सेल क्राइसिस, एंड सार्कोइडोसिस, लैंगरहन सेल हिस्टियोसाइटोसिस. तो आपको हर किसी के बारे में कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट दिया जाएगा जिसके कारण आप सस्पेक्ट कर लोगे कि यार इसका डायग्नोसिस ये नहीं है. कॉमनली क्वेश्चन आस्क्ड शीहन सिंड्रोम. सो लाइक दैट वाज द मोस्ट ऑफ द टुडेज लेक्चर. आई विल क्विकली गो लेट यू गो थ्रू ऑल द नोट्स. I will share the screen with you so that you can understand what I said in all this 1 hour. I try to keep it short so that it will be easy for you, because एंडोक्राइन में अपने ब्रेक नहीं देना, अपने को छोटा छोटा टॉपिक पढ़ना है, वरना बड़ा टॉपिक इसमें एक बार में, जैसे अगर एक्रोमेगाली और शीहन दोनों एक बार में करें तो that will be too long of a lecture, so I try to keep it short. So this is pituitary. These are the different hormones. Just remember these hormones. इन्हीं के फंक्शन के बेसिस पे आप उसके सिम्टम डिसाइड करोगे और उसके टेस्ट डिसाइड करोगे. तो ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन, estrogen, LH, FSH, ACTH, TSH, these are the anterior pituitary hormone. Sheehan में anterior pituitary जाएगी, कल भी मैंने आपको बताया था, क्योंकि ये पोर्टल सर्कुलेशन से सप्लाइड होती है anterior pituitary, जबकि posterior pituitary की अलग आर्टरी होती है. फोटो देख सकते हो, posterior pituitary की खुद की आर्टरी है, तो it will not be damaged in the case of Sheehan syndrome. फिर panhypopituitarism, जैसे 30-year-old फीमेल वीकनेस, फटीग, कोल्ड इंटॉलरेंस, आपने सोचा हाइपोथायराइड है. प्यूबिक हेयर नहीं है, अंडर आर्म हेयर नहीं है, आपने सोचा यार एक और एक्सिस चली गई है तो अपना गोनेडोट्रोपिन चले गए, एमिनोरिया गोनेडोट्रोपिन चले गए. लेटेंट टीबी की हिस्ट्री है तो ये एडिसन भी आप सोचने लग गए. फिर पेल फाइंडिंग पिक्चर है विद डिक्रीज सोडियम विथ नॉर्मल पोटेशियम. अगर डिक्रीज सोडियम विथ नॉर्मल पोटेशियम मतलब एडिशन रूल आउट हो गया. अब आपने सोचा यार ऊपर से ही टीबी के कारण ही इसकी पूरी पिट्यूटरी चली गई है, तो आपने सोचा यार टीबी के कारण पैनहाइपोपिट्यूटिज्म है, तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, आपने सोचा सीधा एमआरआई करा लो. दैट इज द सिली मिस्टेक. ऑलवेज गेट PTHCG, दैट इज यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट इन ए यंग फीमेल विथ मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी, एमिनोरिया हो सकता है ये प्रेग्नेंट हो. सबसे पहले उसको रूल आउट करो. अगर वो नहीं होता देन यू कैन थिंक ऑफ पैनहाइपोपिट्यूटिज्म. तो इसका आप हो सकता है टीबी, इसके ब्रेन में भी इन्वॉल्वमेंट हो चुका हो. मेनिंजियल टीबी के बाद ट्यूबरकुलर एंसेफेलाइटिस के कारण सेकेंडरीली पैनहाइपोपिट्यूटिज्म हो गया हो, क्योंकि नॉर्मल पोटेशियम, अगर पोटेशियम हायर होता तो आप इसको एडिसन भी सोच सकते हैं. सो दीज आर द डिफरेंट. और एडिसन के अंदर पेल स्किन नहीं होगी, उसमें डार्क स्किन होगी, बिकॉज देयर इज इंक्रीज इन MSH. So these are the different causes that we talked about of panhypopituitarism. It is tumor, craniopharyngioma, bleed like trauma, infiltrative disorder like sarcoid, amyloid, histiocytosis, Sheehan syndrome in the postpartum female. Most common causes pituitary microadenoma. Sheehan syndrome की common history मैंने आपको बता दी. फीमेल अपने बेबी को ब्रेस्ट फीड नहीं करा पा रही, या तो PPH की हिस्ट्री होगी या सी सेक्शन की, क्योंकि सी सेक्शन इज द ब्लडियस्ट प्रोसीजर. इसका डायग्नोसिस Sheehan बना दोगे. लेकिन ऊपर वाले सारे सिम्टम हैं, लेकिन उसका प्रोलैक्टिन बढ़ा हुआ है स्लाइटली, और उसका हेडेक की हिस्ट्री है, 3 एक्सेस है, तो यहाँ आप नॉन फंक्शनिंग पिट्यूटरी एडिनोमा बनाओगे. क्योंकि कुशिंग्स के अंदर तो कॉर्टिसोल ज्यादा होता है, एक्रोमेगाली में IGF-1 ज्यादा होगा, हाशिमोटो में के लिए एक एक्सेस खराब होगी. पिट्यूटरी माइक्रोएडिनोमा हो गया, एडिनोमा ने बाकी चीज को कंप्रेस करा तो बाकी सारे लेवल अपने आप कम हो गए. साथ में स्टॉक मास स्टॉक इफेक्ट के कारण प्रोलैक्टिन स्लाइटली बढ़ गया, तो ये आपको ध्यान होना चाहिए. फिर पैथोफिजियोलॉजी अपने ने बता दिया था, हाइपोपरफ्यूजन होता है कॉजिंग इन्फेक्शन. तो ये प्लीज आप शक्ल अपने जीवन भर याद रखो. यू कैन सी लाइक देयर इज ए oranges you in this patient. ये orange pale color जो है ये किसका है, Sheehan syndrome का. and on the conjunctiva you will find a normal pink conjunctiva, that means paler without anemia. तो one of the diagnosis is Sheehan, other is hypothyroidism. Sheehan में hypothyroidism होता है, लेकिन कौन सा होता है, सेकेंडरी. दूसरे देखो एम्प्टी सेला, बिल्कुल ये खाली दिखाई देगी आपको सेला टर्सी का. दिस इज एम्प्टी सेला ऑन द MRI. तो ये सिम्टोमेटिक पेशेंट में कराओगे. सो दूसरा आप यहाँ देखो बिल्कुल फाइन रिंकल्स, ये देखे ना, ये बिल्कुल फाइन रिंकल्स
तीन तीन ये फाइन रिंकल्स, ये क्लासिकल है ना. ऑन द हैंड यू कैन ऑल्सो सी इन ए 30-year-old these hands are not normal, these are the fine wrinklings of the hand, this is a classical case of शीहन सिंड्रोम. तो अब इसके साइन एंड सिम्टम आप इन्हीं के बेसिस पे देख लो. अगर प्रोलैक्टिन नहीं हो रहा, प्रोलैक्टिन निकलेगा तो अनेबल टू ब्रेस्ट फीड फर्स्ट सिम्टम होता है. ग्रोथ हार्मोन नहीं हो रहा तो शुगर कम हो जाएगी. एमिनोरिया नहीं होगा क्योंकि एस्ट्रोजन कम हो जाएगा. और कॉर्टिसोल नहीं होगा तो बीपी और शुगर कम हो जाएगा. थायराइड नहीं होगा तो हाइपोथायराइडिज्म हो जाएगा. तो इसी के कॉमन हाइपोथायराइड के सिम्टम आपको पता है, मैंने कई बार बता दिए. पेशेंट विल बी लेथार्जिक, विल हैव वेट गेन. ठीक है, दीज आर द सिम्टम. लेबोरेटरिकल डायग्नोसिस कम से कम 3 एक्सेस में आप प्रूव करोगे तो प्रोलैक्टिन कराओगे, टीएसएच कराओगे, T4 कराओगे, कॉर्टिसोल कराओगे, एसीटीएच, कोसिनट्रोपिन, IGF-1. ठीक है, तो आपने इसको प्रूव कर दिया लो है, इसको प्रूव कर दिया लो है, और इसको प्रूव कर दिया लो है. इसका मतलब 3 एक्सेस प्रूव हो गए. बाकी मिले तो अच्छी बात है, ना मिले तो भी कोई बात. ठीक है, इफ प्रूवन एमआरआई ब्रेन कराओगे, एमआरआई ब्रेन में आप देखो खाली पड़ी है सेल्ला टर्सी का बिल्कुल. सो दिस इज एम्प्टी सेल्ला. ट्रीटमेंट रिप्लेस द पिट्यूटरी हार्मोन. हमेशा स्टेरॉइड को पहले रिप्लेस करना बिफोर थायराइड हार्मोन. सेम प्रोटोकॉल फॉलो कर दो. मिक्सिडीमा कोमा में हमेशा स्टेरॉइड को पहले रिप्लेस करते हैं. तो प्रेडनिसोलोन 10 mg पर डे देंगे और थायरक्सिन 1.6 माइक्रोग्राम. ये बात ध्यान रखना कि देखो स्टेरॉइड की रिक्वायरमेंट, जब भी बॉडी में स्ट्रेस बढ़ेगा तो स्टेरॉइड बढ़ता है, क्योंकि स्ट्रेस इन्फ्लेमेशन करता है, और स्ट्रेस के कारण बंदा खा नहीं पाता तो शुगर डाउन होती है. तो अपने को स्टेरॉइड हार्मोन बॉडी नेचुरली बढ़ाता है ताकि एंटी इन्फ्लेमेटरी रोल प्ले करे, साथ में आपका शुगर को आपका पेशेंट एक लाइक यू कैन से सेकेंडरी एड्रिनल क्राइसिस के साथ आ जाएगा इफ यू डू नॉट एक्सप्लेन कि आपको स्ट्रेसफुल सिचुएशन में अपनी डोजेज बढ़ानी है प्रेडनिसोलोन की खुद, टू फॉलो ए नेचुरल रिदम ऑफ द बॉडी. Now features of Sheehan in the male with autoimmune disorder with MRI is showing gadolinium contrast like this. देखो कितनी बड़ी सी पिट्यूटरी दिखाई दे रही है. That is lymphocytic hypophysitis. Autoimmune disorder steroid treatment में दोगे. So that is the difference between both of these. ये मैंने यहाँ लिखा हुआ है. Sheehan सिर्फ फीमेल में होता है, जबकि मेल फीमेल सब में हो सकता है. Autoimmune disorder के साथ एसोसिएटेड होता है, ये प्रेगनेंसी के बिना भी हो सकता है. और इसमें पिट्यूटरी बड़ी दिखाई देगी जबकि Sheehan में छोटी दिखाई देगी. Other causes of panhypopituitarism is tuberculosis, ischemia, or sickle cell disease. So these are the other causes of Sheehan that you should be aware. All other causes of Sheehan that you should all be aware. So I hope it is clear to you now. ठीक है. So good night all of you. Take care. We will return tomorrow with increasing pituitary hormone like acromegaly or gigantism. So today we have concluded Sheehan and panhypopituitarism. I hope it is clear to you. If any doubt, do share with me freely. Take care.